What is Route 53 in AWS? So let's see. So AWS Route 53 is a highly available and scalable managed DNS. Highly available and scalable managed DNS. DNS कौन? What is DNS? It's a domain name system. ये जो छोटे छोटे concepts सब जो words रहुची networking words जमती को कहली firewall कौन हो, right? Protocols कौन हो, IP address, right? Subnet, CIDR. ये सब जो concept सब अच्छी जो keywords ये सब keywords तमें सब जमी तेले भी मने रखिवा को पड़िबो ता विषय तमें हमें नेटवर्किंग कंसेप्ट पर जानिया गुरु मु सजेस्ट करिवि कि तमे टिके ब्रश अप कर दियो बा एक्सप्लोर करो एक्स्ट्रा तम आडू थ्रू इंटरनेट टिके एक्सप्लोर कर दियो तो आमे जतबे मूव करबा आगु को राइट तो जो वर्ड्स मु कहबी तमे किछि नुवा जेमते न लागियो राइट तुम जानि परतो छे ए सहित मैं जहां भी पढी चल तमे सेटा को अक्वेंटेड कर परबो बा सेटा को तमे देखि कि जानि परिबो जे एटा ही हमें पढिबा को जाउ छ राइट सो लेट मी स्टार्ट हियर सो AWS Route 53 is a highly available and scalable managed DNS. Managed means managed by AWS, which is managed by AWS. Okay, that's why it's managed DNS, but domain name system. So DNS, what is DNS? It's a collection of rules and records which helps client to now understand how to reach a server through the URL. So what is URL? Uniform Resource Locator. Okay, Uniform Resource Locator. Actually, what happens here? URLs, आमे जेकोनसी URLs यूज करूचे, जोड़े कि हमारा domain name system रे यूज होचे DNS, domain name. राइट जेमते हमर google.com google.com रे हमें तो मालेटा कोन google.com हेला हमर ओटे डोमेन तो route 53 कोन करछि हमको प्रोवाइड करछि कोन गोटे डोमेन नेम सिस्टम जोटी हमें डोमेन गोटे क्रिएट करि परिबा आ हमर डोमेन को होस्ट करि परिबा द सिंपल वे जे हम सिंपल वर्ड रे हमें बुझिबा तो route 53 कोन करिबन डोमेन होस्टिंग डोमेन क्रिएशन आउ डोमेन होस्टिंग पाई हमें यूज करिबा ओके route 53 सो डोमेन जेतो हमें कलेक्शन कोचे clients and DNS is a collection of rules and records which helps clients understand how to reach a server through URLs uniform actually resource screen share हेनी में भी नहीं है ही तो हाँ स्क्रीन इज ऑलरेडी shared कहाँ को देखा जाए नेटवर्क शुभश्री तो देखा जाओ नहीं शुभश्री देखा उसको स्क्रीन ना केवल अपन को नेम टास्क विजिबल अछि तो okay so next okay so Amazon Route 53 effectively connects users' requests to infrastructure running in AWS such as EC2 instances. जो resource विषय में कथा होतले right? What is resource? जमती कि EC2 instances, Elastic Load Balancer, S3 bucket, right? These are the resources. These are the services. हमें देखी दिले कौन? Service provide को service so सब जो service होची जमती instance गोटे resource, ELB गोटे resource, EBS गोटे resource. Right, S3 bucket what a resource, right? So Amazon Route 53 effectively connects user requests to the infrastructure running in AWS, right? तो हमें कौन कल DNS तो हमें जानी दे is a collection and records which helps clients understand how to reach a server through URLs. Okay. So in AWS कौन होची ए मोस्टली कॉमन records रोची जोटा कि हमर ए record कुआ जाए बा 4 times a C name alias
ओके डिफरेंट टाइप्स रे रिकॉर्ड्स रोची जोटा कि हमर गोटे फर्स्ट रोची ए रिकॉर्ड जोटा कि हमर माने कोन URL टू IPv4 राइट सो IPv4 व्हाट इज IP हमें जानले कोन IPv4 होची कोन IP हला IP रो फुल फॉर्म हला कोन इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल राइट इंटरनेट प्रोटोकॉल सो ए आईपी रो कौन अच्छी ना दुईटा वर्जन्स अच्छी फर्स्ट जो वर्जन्स ता थिला सेटा IPv4 वर्जन्स द लेटेस्ट वर्जन जोटा हम यूज बर्तन करूचे IPv6 सो IPv4 एंड IPv6 बोथ आर यूज्ड सो हमें आ भितर पूरा एलाबोरेटिवली जानिबा IPv4 रो बिट ता कौन केतेटा बिट यूज होची IPv6 से केते तो IPv6 हमें काहे की यूज कले IPv4 तो चलतिला पुनी IPv6 का यूज कले राइट ता विषय हमें पूरा डिटेल्स रे जानिबा हमरो सबनेट बा हम जतले बीपीसी क्लास पढियो ता विषय कंप्लीटली जानिबा तो एति की मन रखिता जेमति हमें आईपी एड्रेस देखितले कोन वर्तमान कोन देखितले राइट तुम देखितो चारिटा सेक्शंस रे रहउची राइट जोटा कि हमरो सपोज 10.42.31 डॉट सपोज 12 ओके तो एठी हमें कोन देखिले सपोज ये चारिटा डिवाइड होगी चार रोजी राइट सी एवरीथिंग आर 8 bits right 8 टोटल कौन 32 bits रो IP एड्रेस right 32 bits रो maybe IPv4 32 bits right and second IPv4 हमें चेक करता बा IPv4 versus IPv6 the difference anyway IPv4 32 bit right how IPv6 ला हमर कोन 128 bit addresses right 32 bit तमे तो 32 bits रो देखुचे कोन each sections right कोन होची ना 8 bit represent करूची 8 bit 8 bit 8 bit 8 total 32 bits right IPv4 but IPv6 ला कोन 128 bits 128 bits so 128 bits कौन पाई माने यूज कराला 32 bits ला कोन 32 bits कौन कोची ना 4.3 billion unique addresses right हम जानि छे कोन IP address सब बोला कोन रोडे unique address so unique address केमिति एक्चुअली यूज होची देखो पर जो सेक्शंस चारटा सेक्शन रे यूज होची फर्स्ट जो दीटा सेक्शंस रोची राइट सेटा हला कोन तमरो कोन देखि तो हम सब जानते मैक एड्रेस चिकोन सी आईपी एड्रेस तो सिस्टम देखियो सिस्टम रो गोटे मैक एड्रेस बा राउटर एड्रेस थाए राइट सिस्टम एड्रेस सिस्टम एड्रेस बा मैक एड्रेस बा सिस्टम एड्रेस थाए राइट आ गोटेला आउ जो चारटा आइटम रहला एटाला कोन चारटा 8 16 बिट रहला 16 बिट रो एटा रहउछ हमर कोन नेटवर्क एड्रेस ता नेटवर्क सपोज हमर कोन एयरटेल रहला बा जियो रहला राइट दीज आर द नेटवर्क एड्रेस एंड एटाला हमर सिस्टम एड्रेस जेमति कि हम जानले कोन आईपी एड्रेस ला कोन सब बळे यूनिक रहउछ यूनिक माने देखो ए जो दिटा मो सिस्टम रो जो सिस्टम एड्रेस ता मोर मैक एड्रेस ता सब बळे डिफरेंट रहबो तमरो डिफरेंट थिबो जेमति मोर एयरटेल ए रीजन रो एयरटेल एड्रेस ता मोर आसी गेलो 31.12 ए रीजन रे तमर दर मोर दर इटी गुटे ए नेटवर्क रे मोर सेम नेटवर्क रे सपोज पांचटा डिवाइस कनेक्ट हेछि पांचटा डिवाइस कनेक्ट हेछि तो पांचटा डिवाइस कनेक्ट होला पर जदो देखिबो नेटवर्क एड्रेस ता कोन रहबो सेम रहबो बट हमर सिस्टम एड्रेस सब डिफरेंट डिफरेंट रहबो राइट तो सेति पई एटा कोन होबो यूनिक हे जाय सेति पई एटा यूनिक आईडी हिसाब रे काम करे राइट ठीक है आबि सर आउरी पूरा डिटेल्स रे हमें जानबा IPv4 IPv6 विषय बट तमे जेमती हमें वर्तमान देखले सर्च करिगिरी राइट
4 versus IPv6 तमे जदि सर्च करी तमे देखि परिबो चेक कर पर तार डिफरेंस ता कोन IPv4 जेमति हम जानिले कोन 4.3 बिलियन कोन यूनिक addresses यूज होची जोटी कि IPv6 uses 128 b addresses and a vastly larger pool of unique IP address, right? So it is a complete details address size and format हम जानले IPv4 को uses dot decimal notations हम जब देखिले चारटा कैटेगरी रो चारटा पार्ट रे रोची डेसिमल भीतर रोची 0.168.11 right similarly but एटा कोन होची ना IPv6 uses hexadecimal numbers hexadecimal number right एटी हम देखले न्यूमेरिक केवल नंबर्स बट एटी तमे अल्फाबेट हमके एटी मिलियो राइट अल्फाबेट्स तो एटा हेक्साडेसिमल एटा कोन कुछ ना जेमति केला 128 bit it's approximately some like it's more than the systems like whatever it will entirely cover the world पूरा वर्ल्ड को कवर करि परिबा एते आईपी एड्रेस जनरेट हबो तो IPv4 कौन पे हमें आउट होची ना IPv4 कौन दोची 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस बट bigger data more than that users are using the internets right the internet more than 4.3 billion user use करिवे तापर IP एड्रेस कोन आउ एड्रेस एक्सेस दबा पाई माने एड्रेस असाइन करिबा पाई नथिबो तो व्हाट इज IP एड्रेस फर्स्ट बुझो IP एड्रेस कोन ना नेटवर्क रे गोटे एड्रेस राइट इंटरनेट रे गोटे एड्रेस राइट माने धरो ए जो एड्रेस ता हमें देले 10.42.31.12 तो माने ए एड्रेस ता कोन मो सिस्टम रो सपोज दिस इज माय सिस्टम एड्रेस तो मते की रीच करियो पहुंचबा को चाहउछंती बा मते की मेसेज करियो चाहउछ मते भी कनेक्ट करियो बा दे कैन कनेक्ट यूजिंग दिस एड्रेस जेमति हम सब घर पाखे सब घर रो गोटे गोटे एड्रेस थाए राइट बिल्डिंग नंबर स्ट्रीट नंबर सब राइट so similarly system सब सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट तो तांकर गोटे गोटे इंटरनेट एड्रेस जोटा कि यूनिक एड्रेस through that one system can connect to the another system जेमति कि हम मोबाइल रे भी गोटे एड्रेस रोची राइट आईपी एड्रेस जब जेतरा डिवाइस यूज करछ सतरा आईपी एड्रेस तमरो रहइबो राइट परफेक्ट तो एठी हम जानले कोन इन AWS the most common records are A records जोटा कि मुझे बे बुझोतलन URL हम जानले यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर रो कन्वर्ट करिवो IPv4 तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम जानले जोटा कि हमर डोमेन नेम ता राइट सपोज मुदली ranjitswain.com ओके तो इटा हला हमर कोन URL राइट तो ए URL आमे जेतबले कोन हिट करिबा हमर ब्राउजर रे ranjitswain.com मारिबा राइट तो कोन बना इंटरनेट कोन करिवो ऑटोमेटिकली एटा को रिजॉल्व करिवो कोट को ना गोटे आईपी एड्रेस को सपोज एटा हला मोर ranjitswain.com जोडा अछि तार आईपी एड्रेस तो ये आईपी एड्रेस हला कोन गोटे सिस्टम रो एड्रेस ता गोटे सर्वर रो एड्रेस ता राइट जोटी की ए URL ता बा डोमेन ता होस्ट कराइछि बा होस्टिंग कराइछि जोटी की एप्लीकेशंस रन होछि तो जतबले हमें ranjitswain.com मारिबा से ऑटोमेटिकली कोन करबो ना ए जो DNS ता यूज करछ हमें URL ता यूज करूछे तार जो एड्रेस ता ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होबो टू द आईपी एड्रेस सिस्टम एड्रेस को रिजॉल्व तो करबो के ना route 53 in AWS so AWS रे route 53 जे रिजॉल्व करियो सेमथि 4 times A जोटा URL रू IPv6 एड्रेस रिजॉल्व होबो
माने कन्वर्ट हो सी नेम है जोटा कि कैनोनिकल नेम आम कहे नॉर्मली तो यूआरएल टू यूआरएल जमती कि आम धर कौन देखिव तुम मेल तुम जीमेल यूज कर राइट जीमेल यूज कर राइट तो तुम कौन कर जीमेल यूज कर तुम कौन जीमेल यूज कर गोटे सेकेंड व्हाइट बोर्ड ओपन कर दूचे पूरा डिटेल्स रे बुझ ओके तापर आमे धीरे धीरे मूव करियो यूआरएल टू देखले ए रेकॉर्ड कौन होची ना हमरो कौन यूआरएल टू IPv4 4 टाइम्स ए कौन होची ना यूआरएल टू IPv6 ये जो यूआरएल टू IPv6 है हमरो कौन हेक्साडेसिमल आईपी एड्रेस टागरी तापर हम देखले कौन सी नेम जोटा कि हमरो कैनोनिकल नेम कहूचे जोटा कन्वर्ट होची यूआरएल टू यूआरएल तो यूआरएल टू यूआरएल जो हम कहूचे तमे देखिथिबा हम तबले गोटे जीमेल यूज करछे राइट तापर हम कोन करछे gmail.com मारले राइट तमे देखिथिबो तमे तले गूगल ओपन करिथियो राइट साइट रे गोटे थिबो मेल क्लिक करिया पय तति तमे तो करियो से कोन करछि ना ओपन करछि mail.google.com तो आमे जतबे हिट करिया कोन mail.google.com बा gmail.com राइट तो आमे तो mail.google.com बा gmail.com तो से कोन करिवे ना दी जन जाक कोन कन्वर्ट हेबे कोडी की गोटे यूआरएल सपोज मी यूआरएल कन्वर्ट हैला तो जीमेल माले mail.google.com को कन्वर्ट हेजो राइट तो सेमती जिकोनसी याबरे सपोज मु एम डॉट सपोज ranjitswani.com तरिकन सपोज सेटा होला सपोज मोर मेलिंग सर्वर बा मोबाइल सर्वर with m.ranjitswani.com मोबाइल एप्लीकेशंस पेनाबो तो मु चाहूची कोन आ गोटे कोन करबी यूज कर परबी blog.ranjitswani.com ओके तो से हिसाब रे हमर कोन काम करिवो राइट कन्वर्ट अब यूआरएल टू सेमती alias नेम रहउची alias नेम होची कोन यूआरएल टू AWS रिसोर्सेस सपोज alias नेम कोन होची URL to AWS resource, right? AWS resource suppose EC2 instances. Suppose मैं EC2 instance रे गोटे EC2 instance नहीं गली, गोटे server नहीं गली. तो server जब EC2 instance में गोटे नेली, से EC2 instance रे कौन गोटे IP address थीबो, right? ये IP address टा गली. मु चाहूँची मोर ये जो blog.ranjitswani.com अच्छी DNS टा URL टा ए URL टा को मु कौन कहूची ना कनेक्ट करिया पय चाहूची कोन टू दिस EC2 instances सपोज EC2 इंस्टेंस अछि ए EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर तो मुझे तो एठी blog.ranjitswani.com से कौन करियो ऑटोमेटिकली alias कन्वर्ट कर दो ए सर्वर को सेठी हमें मैसेज करो हमें डिटेल्स रे जानियो तमे केमति तुम बते देबी केमति कोन सेटअप सब तमे करिवो ओके नाउ नेक्स्ट let's move on to the other chapter. Okay, so other slides. So hosted zones तामे जानिले कोन AWS 53 with route 53 केमति कोन काम करूची कोन पय हम यूज करबा तर ओवरव्यू तर मोस्ट कॉमन रिकॉर्ड कोन पय यूज होय कोन कोन मतलब hosted zone ए जो रिकॉर्ड सब हमें जानिले ए रिकॉर्ड सब हमें hosted zone पे यूज करबा. Okay, so a hosted zone is a container for records, and records contain information about how you want to route traffic for a specific domain. जोटे कि मैं बर्तमान बुझौतली गोटे स्पेसिफिक डोमेन पई हमें केमती ट्रैफिक को राउट करिबा राइट. तो बर्तमान देखो गोटे एग्जांपल एठी अछि जेमति ranjitswani.com आ मोर दीटा डोमेन सपोज नै छि mail.ranjitswani.com m.ranjitswani
तो आ भितर तुम जोटा को क्लिक करिवो तो कौन से राउट हम गोटे जगह को कारण मु सब डोमेन नहीं बट सब डोमेन रो जो अलायस बनैछि राइट सेठी कौन जहाँ भी मु क्लिक करी से सेठी जाइकरी आसी जीव सब डोमेन रंजित.com आसला राइट तो क्लासरूम रे जाइकरी ओके एटेला रंजित.com तो मु जदी आउ गोटे मोर सब डोमेन मोर क्रिएट अछि जोटा कि सपोज मु रजिस्टर्ड डॉट ranjitswai.com से कौन करियो रजिस्टर्ड डॉट ranjitswai एटा हला मोर कोन सब डोमेन एटा हला मोर कोन सब डोमेन जोटा कि एटा कोन गोटे ए रेकॉर्ड मु सेटअप करिछि जोटा कि से कन्वर्ट होउछि सेही पर्टिकुलर सर्वर को जोटी मोर ए एप्लीकेशन ता रन होउछि राइट तो सिमिलरली मु जदी कोन करबी एबे क्लासरूम देखो ये पर्टिकुलर ranjitswai.com क्लासरूम मानी से कौन होला बर्तमान ए पर्टिकुलर जो एड्रेस ता यूआरएल ता से कौन होला ए यूआरएल ता कौन कनेक्ट होची आ गोटे सर्वर को जोटी और ए एप्लीकेशन तमर जो क्लासरूम एप्लीकेशन ता सेठी होस्ट है राइट एटी गोटे एप्लीकेशंस register.ranjitswai.com राइट एटी गोटे एप्लीकेशंस क्लासरूम एप्लीकेशन एटी गोटे रन होची किंतु डिफरेंट वे रे देखा मु केमि तमको माने एप्लीकेशंस हमें रन करछि एटी ranjitswai.com रसला एटी कोन register.ranjitswai.com एटी ranjitswai.com क्लासरूम राइट तो यही हिसाब रे हमें यूज कर परिबा ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्लाइड so hosted zone janlo right so a hosted zone and the corresponding domain have the same name okay so there are two type of hosted zones one is public hosted zone I would have kono private hosted zone what is public hosted zone I would have private hosted zone public hosted zone ta hochi kono na contains record that specify how you want to route traffic on the internet रे हमें ट्रैफिक हम जो traffic type केमते route करिवा right so when you register domain with route 53 Amazon will create a hosted zone for you automatically तो हमें जदी route 53 यूज करिवा सेटा हमें एटा जानिले कोन route 3 ला बट मैनेज route जने जद हम जने पचारी what is route 53 it is a managed कोन managed DNS service right managed DNS service of AWS simple managed DNS service DNS is domain name system service of AWS so AWS provide kochi route 53 so what we can do here so through route 53 we can purchase a domain we can purchase a domain what else we can do we can host the applications से कौन करिबा ना ऑटोमेटिक सेति पे से कौन करना हमें तो राउट 53 रे गोटे कोन डोमेन रजिस्टर करिबा किनिबा सेटा एटा किनिबा पड़ियो तुम परचेज करिया पड़ियो बस एमती ranjitswai.com जो डोमेन ता मु इनिशियली इन 2015 में भी 15 और 16 मु ए सर्वर ता एक्चुअली ranjitswai.com ता मु किनितली पड़ी AWS रे AWS रे किनितली बट माकू केबे ट्रांसफर कर दिछि अलगा डोमेन अलगा सर्विस प्रोवाइडर को ओके ताकू कुआ जे रजिस्टर अलगा रजिस्टर राउट 53 गोटे सर्विस तो एठी हला Amazon हला हम पई गोटे रजिस्टर जे कि हमर डोमेन टाकू रजिस्टर करबो इंटरनेट राइट तो मु वर्तमान आउ एटा को मु कोन करछि ट्रांसफर कर देछि डिफरेंट रजिस्टर पाखकू बट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर जोटी के मते चिप मिलिला राइट तो से हिसाब रे तमे कंपायर करिवो फाइन ता विषय हम परे बुझिबा how would ela kono private hosted zone joti kono je contains record that specify how you want to traffic to the Amazon VPC okay goda Amazon VPC vitare virtual private cloud vitare ba tama infrastructure vitare network vitare kem tame connect karibo
right that I'm a private hosted zone रे ठीक है गोटे resource आ गोटे resource को right तो गोटे URL रू गोटे resource को केमते connect करिवा ताइ से हमें जानिबा so what is DNS DNS विषय हम तो जानिले domain name system right तो what is DNS right so DNS तमे जानिथिबो starting रो जेतोळे तमे पुराना दाई तमे देखिथिबो BSNL जेतोळे लैंडलाइन फोन थिला तो गोटे दोतला इंडेक्स बुक दोतला राइट टेलीफोन डायरेक्टरी को जाय तक टेलीफोन डायरेक्टरी तो टेलीफोन डायरेक्टरी सब देखिबो समस्त ना आगे रे तार फोन नंबर मोबाइल नंबर का मोबाइल नंबर थिबो राइट तमे जदी कोनसी ना तमे सर्च करजो माने कोनसी लोकन कनेक्ट करिया अछि कॉल करिया अछि कोनसी एजेंसी हो कोनसी कंपनी हो कोनसी दुकान हो शॉप हो राइट तो तमे कोन सेही पर्टिकुलर लोकर ना खोजिबो ता ना आगे तुम से मोबाइल नंबर ता मिल जिवो राइट सिमिलरली डीएनएस होची कोन ना ए काइंड ऑफ ए record system right जोटा की कंप्लीट डोमेन नेम रो एड्रेस रो record सब ताके तम पाइबो ओके सो इट्स ए फोन बुक ऑफ इंटरनेट तम कहि परियो फोन बुक ऑफ इंटरनेट DNS ता right domain name system is the phone book of internet it is used to convert human friendly domain names into the internet protocol address IP address into the IT so human friendly address देखो ए दुईटा भितरे ranjitswine.com और रहिला ए नंबर ता तबे तुम कोडा इजी लागुची this one this is human friendly ranjitswine.com तो ताकू तमे मने रखिबा को डिफिकल्ट हो राइट ताकू चाहिबो जदी तमे कोन करिवो चेंज करिवो डोमेन नेम तमे चाहूछ ताकू ए रेकॉर्ड गोटे सेटअप करिकरी एटा को कनेक्ट कर दबो एटी की तो नेक्स्ट टाइम जेतोले ranjitswine.com ऊपर क्लिक करबी से ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जो ए एड्रेस को आसी जिवो राइट देखो ए पर्टिकुलर ठीक वेब सर्वर मो लैपटॉप रे ranjitswine.com रे से कोन कोछ ना ऑटोमेटिकली ए एड्रेस को मते नै जाउछि जोठी की मोर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन ता रन होछि राइट तो DNS से काम राइट सो ये IPv4 IPv6 विषय में कथा होतले राइट जोटे ऑलरेडी हमें इनिशियली फर्स्ट ईयर ही पढ़ी साइछि तो IPv4 जेमति कले 32 बिट build roji has 4 billion 4.3 billion different approximately this amount right so nowadays right everyone देखो सबु पिला पाखरे गोटे दिटा लैपटॉप थिबो दुईटा फोन थिबो राइट गोटे फैमिली भी तो तमे देखियो जाय तो 5-6टा फोन एटलीस्ट थिबो दुईटा लैपटॉप थिबो 5टा फोन दुईटा लैपटॉप 17 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रो 17 एड्रेस गोटे family package 17 रो 10टा एड्रेस जदी रहउची think about the all over world how many people will be using the internet तो जेते इंटरनेट यूज करछन 17 एड्रेस तुमको दरकार राइट तो एते एड्रेस आसीबो कोटू टोटल 4 बिलियन 4.3 बिलियन एड्रेस अप्रोक्सीमेटली रहउची तब जदी हम समस्त यूज करिवे तो आसीबो को तो सेटर शॉर्टेज देखा गला राइट से शॉर्टेज को to fulfill that one so the scientists and the network engineers right they decided to create IPv6 so IPv6 was created to solve this issue so IPv6 जेतो आसला तो 128 bits रो एड्रेस आसला 128 bits address which is 340 undecillion addresses so it is more enough to cover the entire earth जेमति कोदली complete world को earth को cover करिके इते एड्रेस अछि that means maybe हमर आउरी 5टा 6टा जुग पळेले भी IPv6 सेमति रही राइट so generally alphanumeric जेतोटा hexadecimal number right alphanumeric with alphabetics how numbers hexadecimal format right so हमें डोमेन विषय जानले डोमेन कोन right ranjitswine.com is a domain तो ए जो डोमेन नेम सिस्टम गोटे अलग डोमेन ता कोन गोटे इंटरनेट रो कोन
एड्रेस टा गोटे एक्चुअली हम देखिया गले इंटरनेट रे एड्रेस टा थ्रू डोमेन नेम टा हमें कनेक्ट करिवा सर्वर को राइट से डोमेन जो एड्रेस टा तार एक्चुअल एड्रेस टा बिहाइंड जोटा रहउची ताकू रिकॉर्ड रखुची के ना डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम ओके तो हमर टॉप लेवल डोमेन हाउ देखो जेम तुम देखैतली register.ranjitswine.com देखैतली राइट सो register.ranjitswine.com वाला सब डोमेन टॉप लेवल डोमेन हो जी ranjitswine.com राइट तारी विषय में बुझिबा बे सो दी फर्स्ट लेवल आउ सेकंड लेवल डोमेन रोज देखि हमर टॉप लेवल डोमेन बा सेकंड लेवल डोमेन तो जेटी टॉप लेवल डोमेन देखो .com .in .gov राइट सब रोजी टॉप लेवल डोमेन राइट टॉप लेवल डोमेन पर तमे देखिथिबो .co.in .gov.in राइट तो एठी .in ता कोन होबो ना टॉप लेवल हे जिवो .co ता कोन आसी जिवो ना सेकंड लेवल डोमेन तो मुझे जेमती कहितली सपोज mail.google.com तो एठी कोन होबो ना एटा गोटे कोन होउची एटा हला सब डोमेन तो आरो मेन डोमेन कोन ना google.com एटा हला कोन मेन डोमेन तो हमें डिस्कशन करछे कोन टॉप लेवल डोमेन और सेकंड लेवल डोमेन तो एठी जेतु .com यूज हेची तो एटा कोन हे जिवो ना टॉप लेवल डोमेन राइट तो समथि जदी हमें यूज करथांते कोन जदी हमें यूज करथांते सपोज ranjitswine.com suppose see let me show you because we are using ranjitswine.com हम जाने .com टाइला एठी हमर कोन टॉप लेवल डोमेन ओके तो जदी डोमेन किनी थांती ranjitswine.co.in ranjitswine.co.in तो एठी कोन हितंता इन टा रिप्रेजेंट्स इंडिया राइट इंडियन रीजन राइट इन तो एठी हमर एक्चुअली इन आसीबो कोन सेकंड लेवल रीजन इन आसीबो सेकंड लेवल डोमेन सॉरी सेकंड लेवल डोमेन अब कोड आसीबो कोन ना टॉप लेवल डोमेन ओके जेतु एठी खाली .com अछि एटा आइजो कोन सिंगल टॉप लेवल डोमेन तो बेसिकली टॉप लेवल डोमेन सिंगल डोमेन राइट मोस्टली यूज्ड होछि .gov.in right in la top level Indian government right .gov.in roach okay top level domain controlled by internet assigned numbers authority IANA right in a root zone database so one database jetu ete sare domains rochi right billions of domains are there and each domain has an address right each domain has an address so taku record kariba pahi kono ote database hi darkar to so it is being so jemti कहली billions of trillions of domains are available billions of domains are available trillions of domains are available so to maintain those records right they are using the root zone database and that is controlled by internet assigned numbers authority so tame jodi dekhibo eta IANA okay let me show you tame yaku just google e search kare tame pai jibo right internet search kale modi directly eta ko use karuchi dekho IANA.org domains root d देखो रूट जोन डेटाबेस तांगा डेटाबेस देखो केते सारा डोमेन नेम अछि टॉप लेवल डोमेन सेकंड लेवल ये सब मेंटेन होछि
database, right? तो आमे धरो सर्च करतले कोन .co.in विषय जानतले, right? .co.in, sorry, .co Maria, .in. Top level, sorry, only top level domains are maintained by, top level domains controlled by. So second level domain, we cannot find it over here. Okay, only top level domain. So .in pilot khojili, right? .in la country code, National Internet Exchange of India, right? I mean the .us, right? .us. So it's for registry services, country code. Similarly .com, right? .com. Let's go up. You get. Okay. .com generic. It's the generic domain, top level domain. VeriSign Global Registry Services provided. Okay. So it is search kar paribo ina.org root db re tame complete domain details pai paribo. Okay. Only top level domains. There are the number of top level domains. You can find it over here. Okay. Then next, domain registrar. तमें तो domain name जानिले, right? Domain name कौन जानिले, right? तो domain पाइबा केमिति, right? तापाय हमको दरकार कौन? गोटे registrar दरकार, जी आमो पाई domain register करिवो. हमें तो directly जाई परिवानी ना, माने कौन? INA पाकु का हमें directly जाई परिवानी, तापाकरा हमें register करी परिवानी. तो हमको गोटे दरकार है कौन? Domain name register, जोटे की हमें register करिवा, right? So ताकु register करिया पे हमको गोटे registrar दरकार. तो एठी हमर registrar हबो किए Amazon. जेता हमें route 53 यूज करिया को जाउछे, तो Amazon हमर हबो register who will register a domain for us. A registrar is an authority that can assign domain names directly under one or more top level domains. So these domains are registered with inter-NIS. So inter-NIC, not sorry, NIS, inter-NIC who actually register these domains. INA is the database where the top level domains are stored, but this inter-NIC is going to register domain for you. So we cannot directly go to that, right? So who will do for us? The registrar. Okay. So what this inter-NIC? A service of ICANN, Internet Corporation for Assigned Names. It's a service of ICANN, Internet Corporation for Assigned, which enforce uniqueness of domain names across the internet. So who is responsible? Now ICANN. Okay. Responsible to make sure the domain whatever you are purchasing or creating is unique. See, already ranjitswine.com purchased by me, right? I already acquired it. If someone else will try to register the same name, it will not allow, right? It's already registered. And who will take care of this? Now, this ICANN. Okay. Sorry, guys. Okay. So who decides, like, who takes care of the uniqueness? No, ICANN, Internet Corporation for Assigned Names. Each domain names get registered in a central database. Each domain name gets registered in a central database known as Whois database. Whois database. Right? So all the top level domains we can find it in IANN database. But all the domains we can find it in Whois database. See, these questions nobody will ask you, but just for your reference, for your understanding. Okay. But register what is registrar?
who registered the domain for you. So registrar means who registers the domain for you. In domain, who is the domain registrar? देखो registrar सब जगह तमे गोटे registrar पाइबो जी तम पई register करिवो, right? Domain registrar रे जेमति godaddy.com, Amazon, Big Rocks, Hostinger, right? ए सब कोन गोटे register. ए सब कंपनी तमे यूज करके तमरो कोन डोमेन तमे क्रिएट करि परिबो. डोमेन तमे क्रिएट करि परिबो. तो मोर ऑलरेडी GoDaddy रे डोमेन अछि, Amazon रे डोमेन अछि, Hostinger रे डोमेन अछि, Big Rock रे फर्स्ट इनिशियली मु जेतबेले स्टार्ट कली इन 2012 अराउंड Big Rock रे गोटे डोमेन मु क्रिएट करथले. फर्स्ट Big Rock सेतबेले एटा गोटे इंडियन कंपनी. Big Rock हला गोटे इंडियन कंपनी. ए सब GoDaddy, Hostinger सब यूएस कंपनी, Amazon अमेरिकन कंपनीज, Big Rock हला गोटे इंडियन कंपनी जोद्री कि मु गोटे फर्स्ट मोर कौन डोमेन मु क्रिएट करतली. तो इनिशियली मु प्रैक्टिस करतली 2014 सॉरी 12 इवन 11 12 अराउंड आई थिंक 11 और 12 2011 और 12 से टाइम रे Big Rock रे मोर गोटे डोमेन थिला जोटे कि मु माने यूज करी करी एप्लीकेशन वेबसाइट निजे बनै कि होस्ट करतली bigrock.in रे. तापर bigrock.in एते एबे पॉपुलैरिटी नाही, स्टिल मार्केट रो अछि, बट मोस्टली पॉपुलैरिटी कोन होनी होछि हमर होस्टिंगर ऑफ bigdaddy.com. होस्टिंगर बिगडैडी बहुत सारा एमती मार्केट रो अछि, वर्तमान बहुत सारा रजिस्टर्ड तमे पाइ जिवो. ओके, बट ई जो चारटा मु तुमको बतौछि बहुत सारा रजिस्टर्ड पाइ जिवो जे कि तमे पई धरो सपोज दिवेंदु चाहुचंती तांकर गोटे डोमेन क्रिएट करिया पई तो divendu.com. सो दिवेंदु कौन करेंगे ना कि होस्टिंगर हो कि बिग रॉक हो कि Amazon रो जाई कि राउट 53 यूज करी बते देब तमे राउट 53 रे Amazon रो केमती यूज करि परिबो माने क्रिएट करि परिबो तमर डोमेन. ता पई तुमको पे करिया पड़िबो. ओके, सब डोमेन रो चार्जेस अछि. ओके, हम बते देबी एतला हमें प्रैक्टिकल करिबो. बुझलो डोमेन रजिस्टर काम कोन. तबर अछि SOA, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड. SOA रो काम कोन होछि ना, it records the stored informations about the name of the server that supplied to the data for the zone, administrator of the zone, current version of the data file. जो domain आमे नबा तारो authority record सब update करो. SOA कहंती the start of authority record. Name server record जोटा कि they are used by the top level domain servers to direct traffic to the content DNS server which contains the authoritative DNS record. जो DNS record सब रोची, DNS record हम देखले केते प्रकार रो, चार प्रकार देखितले, राइट? A 4 times A, CNAME, ls, राइट? तो ये सब जो DNS record होची maintained by the name server record, ताको NS record कुआ जाय. NS record, name server record. ओके, ये record कोन होची ना URL to IP44 ये सब information store होता है जोटे कि एटी बतैछि. ओके, व्हाट इज ए रेकॉर्ड. ए रेकॉर्ड ऑलरेडी मु आमे बुझि सारछि. ए रेकॉर्ड कोन जेमति कहली गोटे कोन फोन बुक रे जेमति आमे देखुतले नेम आउ तार फोन नंबर होतला, एटी सेमति डोमेन नेम तार एड्रेस ता रहतो, आईपी एड्रेस ता. सो ए रेकॉर्ड इज द फंडामेंटल टाइप ऑफ डीएनएस रेकॉर्ड. ए रेकॉर्ड स्टैंड फॉर एड्रेस. A record means address record, right? A record is used by a computer to translate the name of domain to the IP address. जोटे कि हम जान देखितले कोन human readable to machine address बा IP address को convert करिवो, right? Human readable to IP address को convert करिवो, right? So A record होची used by the computer to translate the domain name to an IP address. Okay? So how a record works, let's see in visualized way. So मुझे दर लैपटॉप रे मु कोन कली वेब ब्राउजर मु सर्च कली ranjitswai.com, सर्च कली ranjitswai.com. तो मुझे ranjitswai.com हिट कली तो कोन होना, तो मोर ऑटोमेटिकली से जो एटा कोन डोमेन नेम ता ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम ता एटा कोन करिवो ना राउट 53 जेतु मु राउट 53 जदी यूज करूची, देन राउट 53 जोठी मु जो सर्विस यूज करी होस्टिंगर हो GoDaddy हो तांकर डिफरेंट रजिस्टर अछि से माने कन्वर्ट करी तांकर सर्विस जो से प्रोवाइड करछन से कन्वर्ट करिवो. बट इन केस ऑफ
Amazon तमे the Amazon रे यूज करछ route 53 then route 53 will accept take the request whatever you are sending, right? जहाँ भी रिक्वेस्ट तुम सेंड करछ ranjitswine.com तो route 53 कौन करिवो सेटा को कोन IPv4 को ए रेकर्ड URL टू IPv4 राइट ताको कन्वर्ट कर दो सेंड बैक तो से कौन कला ना मतलब एटा मारली से मते ए एड्रेस टा देला रंजित स्वाई को कन्वर्ट रिजल्व कर देला ए एड्रेस मु एड्रेस टा पाई गली तो ए एड्रेस टा पाई गला परे मो कोन होची ना से एड्रेस टा कनेक्ट करिवो कोन से पर्टिकुलर सर्वर को एप्लीकेशन सर्वर जोठी मोर एप्लीकेशन कोन होस्ट हेची जोठी मोर एप्लीकेशन रन होची तो एप्लीकेशन कोन एप्लीकेशन आसला सेटा तारो रेस्पॉन्स बैक जीवो http रेस्पॉन्स ले मोर वेबसाइट को मु ओपन करके देखि परिबी मो लैपटॉप रे देखो आमे तो जे कोनसी गोटे वेबसाइट एंटर करछे हम लैपटॉप हमकु देखि पाउछे राइट से वेबसाइट ता हमें देखुछे बट से वेबसाइट बैकएंड रे जो कामटा होची पूरा एती काम होची बैकएंड नेटवर्क रे जो ट्रांसफर होची डेटा राइट वेब एड्रेस तमे हिट कलो माने से पर्टिकुलर सर्विस ताकू कोन आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करिकि संग संग रेस्पॉन्स दोची तापर पुनी से आईपी एड्रेस ता हिट होची जो सर्वर रे से एड्रेस को हिट होची जोटा तमे मारछि सेही पर्टिकुलर एप्लीकेशन से सर्वर रे जहां रन होची तार रेस्पॉन्स ता तुमको शो करूची जोटा कि हमें हम स्क्रीन रे देखि पारुचे राइट एति गेला ए रेकॉर्ड्स केमती काम करूची बुझि पाला क्लियरली so what is the C name जोटा कोदली canonical name तो canonical name can be used to resolve one domain to another canonical name can be used to resolve one domain to another okay जेमती बताउतली m.ranjitswine बा mobile.ranjitswine right तो कोन होची suppose am mo pakar ote mobile domain rochi m.ranjitswine and this is used where user browse when user browse the domain using their mobile phones जदि mobile phone रे browse करछन हम so मु कोन करबी सेटा को चाहिबी जदि m.ranjitswine.com मारी से mobile.ranjitswine resolve the same address देखो either तमे mobile.ranjitswine मारलो बा m.ranjitswine मारलो तो सेही गोटे जगह रे गोटे एड्रेस रे ही से माने कोन रिजॉल्व हेबे एकागत एटा जा एटा से canonical name the same we can say the identical name right not identical not okay these are not identical but these are the names which refers to the same address okay now alias record होची कोन एटा ठीक है डिफरेंट केमते अछि ए डिफरेंस जानो कैनोनिकल नेम होला कोन टू डिफरेंट डोमेन नेम्स राइट विल बी resolve into the same address but alias record होची कोन are used to map resource records दरो किछि गोटे S3 bucket गोटे क्रिएट करछि से bucket रे मोर किछि रिसोर्स अछि मु चाहूची ranjitswine.com से bucket को टारगेट करिवो बट ट्रैफिक जो राउट करिवो तो मु कोन करिवो ना सेठी alias record गोटे सेटअप कर देबी राइट सो कैन डायरेक्टली कन्वर्ट टू दिस bucket सो alias record जोडी तमे रिसोर्सेस कोनसी डोमेन नेम को तमे गोटे कोनसी रिसोर्स को टारगेट करी ऐड करिवो जेंदी कहतले इलास्टिक लोड बैलेंसर क्लाउड फ्रंट हो EC2 इंस्टेंस हो राइट तमे चाहिले alias record सेटअप करि परिवो लेट्स डिस्कस अबाउट द राउटिंग पॉलिसी okay so simple routing policy the first policy name is simple routing policy means if we choose the simple routing policy we can only have one record with multiple IP address if we specify multiple value in a record route 53 returns all values to user in a random order तो ए केस रे कोन होची तमे देखिबो हमें कोन simple routing policy रे धरो सपोज मु कोन कली दुईटा कोन धरो गोटे वेब जेमति कि हमर वेब एड्रेस हमें देखितले सपोज ranjitswine.com राइट ranjitswine.com तो ना राउट टू यूजिंग राउट 53 मु कोन करछ ना ताको कोन
राउटिंग पॉलिसी यूज करके दुईटा आईपी एड्रेस को दुईटा सर्वर को मु राउट करिछि दुईटा सर्वर को मु राउट करछि तो आ भीतर जो कोनसी सर्वर राइट अवेलेबल थी सिंपल राउटिंग पॉलिसी जेटा कि एटा को अवेलेबल सर्वर को जोड़ा थी आईपी एड्रेस तो हमें सेट कर करबे सो कौन कहूँ वी कैन ओनली हैव वन रेकर्ड विथ मल्टीपल आईपी एड्रेसेस तो हमें गोटे रेकर्ड क्रिएट कर गोटे रेकर्ड क्रिएट करिया जोटा कि मल्टीपल आईपी एड्रेस हमें सेट कर परिया आउट हला वेटेड राउटिंग पॉलिसी जोतरे कि हमें गोटे वेबसाइट को हमें क्लिक करबा तो जो सर्वर रो वेटेज हमें सेट करथिबा सपोज हमें दीटा सर्वर नै छै गोटे रखिचे आप साउथ 1 रीजन रे राइट एपी साउथ 1 जोटे कि हमरो मुंबई रीजन आउट हला एपी ईस्ट 1 नॉर्दर्न वर्जीनिया राइट एपी ईस्ट 1 गोटे रीजन रे दुईटा सेपरेट रीजन रे अछि हमर एप्लीकेशन सर्वर ओके त हमें तो यूज करबा सपोज अगेन ranjitswine.com सो कौन हम एठी ना जेति कि हमें तार वेटेज देइतिबा पॉलिसी सेट करतिबा राइट व्हाटएवर वेटेज we would have set for the respective server based on that the what will happen the traffic will go to the respective server okay so 80% means so when we click ranjitswine.com it will go to app east 1 here we have given 80% so what they said we can set 20% traffic to go to app south 1 and 80% traffic to go to so based on the traffic comes most of the traffic will come to ap east 1 so based on the weightage we can split the traffic okay how would actually latency based traffic the routing policy routing policy different routing policy जो हम देखले simple routing policy right weighted routing policy out latency based routing policy so what it does it allows you to route your the lowest network latency for your end user that is which region will give them fastest response time so जोटी को लोएस्ट लेटेंसी हेले हाई परफॉर्मेंस राइट फास्टर रेस्पॉन्स टाइम जदि हाई लेटेंसी हेला कोन हो लोएस्ट रेस्पॉन्स टाइम ओके मन रखि दाओ नेटवर्किंग रे जदि हमरो कोन लोएस्ट नेटवर्क लेटेंसी means faster fastest response time okay fastest response time highest network latency will be lowest response time so आमे देखिथिबा देखो लेटेंसी हमर तो बॉडी जीवो ता माने कोन हमर नेटवर्क रेस्पॉन्स ता कमी जीवो ओके so to use latency based routing you need to create a latency resource record set for the Amazon EC2 or ELB resources okay when Amazon Route 53 receives a query for your site it selects the latency resource record set for the region that gives user to the lowest latency ओके तो सही हिसाब रे हमें सेट करिबा नेक्स्ट आसुची ओके एई हिसाब रे जो लेटेंसी हमें देखिले राइट लेटेंसी मींस राउटिंग रे ए पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए सपोज ओडे यूजर कोन लॉगिन करछि बा एक्सेस करूछि फ्रॉम मुंबई रो एक्सेस करछि बट हम एप्लीकेशंस का सर्वर अछि मुंबई रे गोटे अछि आ गोटे अछि कोन साउथ एपी साउथ 1 रे सॉरी एपी साउथ 1 और एपी ईस्ट 1 जोडे एपी ईस्ट होला नॉर्दर्न वर्जीनिया एपी साउथ 1 होला मुंबई तो एटी होला 45 मिलीसेकंड लोएस्ट लेटेंसी एटा 180 milliseconds highest latency so here route 53 will traffic
send the traffic to AP East 1. जदियो आमे एटी मुंबई रे अच्छे बट तो latency AP South 1 को 180 अच्छी तो हाईएस्ट latency जाउची बट एटी AP East 1 को अच्छे हमर 45 मिलीसेकेंड्स जोटा कि लोएस्ट तो हमर ट्रैफिक कोन हो ना कोडी पडेबो 45 millisecond AP East 1 को because it has the lower latency. Okay, AP East 1.0, right? So next routing policy आछि failover routing policy. So failover नारु ही हम जानि परिया failover routing policy माने जदि किछि सर्वर गुटे फेल हे गला तो आ गुटे अवेलेबल सर्वर को कोन हो redirect हेजिवो. The failover routing policy are used when you want to create an active passive setup. जोटा कि हमें बेसिकली डीआर डिजास्टर रिकवरी ପାଇଁ यूज करा हुए एक्टिव पैसिव माने एक्टिव नॉर्मली कोन प्रोडक्शन सेटअप बा प्रोडक्शन सर्वर सब एक्टिव थाए पैसिव ता जोटा कि स्टैंड बाय ही की थाए जोटा कि हमर डिजास्टर रिकवरी साइट डीआर साइट राइट दैट डीआर साइट विल बी इन पैसिव मोड राइट. सो एठी कोन होछि ना राउट 53 कोन करे मॉनिटर करिवो प्राइमरी साइट. सो Route 53 will monitor the health of our primary site using the health check and will fail over to secondary if primary site is down. So the primary site production is down, then it will redirect the request to the secondary site. That is our DR. That is called failover routing policy. So ये जो same example हमें देखिवा AP South 1, AP South East 2 जोटा कि हमर Southeast 2, maybe it's Singapore, right? Yes. Southeast 2 is the Singapore region. So again, if the user tries to connect to the server or the application, okay, so Route 53, what will do? First check whether the server, right, is active or not. Suppose the active one, which we have given the active one, first it will check is down. So what it will do? It will send the traffic to the passive, to the DR. Suppose the live one is dead, right? So what it will do? It will send the request asila, right? So it check karibo damage achi, right? Ba system down achi. Then what will happen? This will redirect the request to the passive site, right? That is the DR. Automatically the traffic will send. Okay, so this is the Route 53 can do. So that is the, what is that? Failover routing policy. And this is geolocation routing policy. And this is very important, guys. Geolocation route policy. Compare the geolocations, mane amaro two location based on the location will target the audience or the people. So think about the e-commerce site. Suppose Amazon, right? In Amazon, जो e-commerce site अच्छा में किसी भी applications product कौन the Indian people, right? So whenever we try to purchase something from the Amazon, what will happen? It will show the products which is native to the Indian people, right? Suppose which are even not, see, the application, the server, whatever is hosted, it will be hosted in our Mumbai region, right? Nearest to us, nearest to the Indian people, right? So, केमती काहे कि ना देखो basically कौन होची ना Indian people रो जा requirements रोची से particular sites रो हमको मिल जो जदि को भी लोक यूएस रे रही कि राइट अमेरिका रो किछि सर्च करछि किछि परचेस करबा पई जाउ चाहूची then they will show them the applications which is hosted in America region. That is the geolocation routing policy. So what is geolocation routing policy? So let's you choose where your traffic will be sent based on your geographical location. तमर जो geographic location, तमर user location हिसाब रे से कौन करियो ट्रैफिक को सेंड करियो. Okay?
So examples जोड़ा मैं बर्तन बतेली. Suppose you want all queries from USA will be routed to server configured in American customer to their local language. So that will be routed to that respective region. जोटा कि हमर suppose मुंबई जेमती कि हमर रोइला Indian customers जदि केही search करन then local server किछि search question, then it will route it to the respective region, right? So if you see this diagram, suppose we are sitting here in India. If someone sitting in India, and here we have the region, the server is in Mumbai, and for US people we have suppose in Northern Virginia, US East one, right? Suppose the India people sitting in India, whoever is searching something or querying something, right? So it will go to the respective region. And similarly, US people, if they are querying something, it will go to the server, which is situated in the US region, that is Northern Virginia, right? So that's what is the geological routing policy. Based on the geographic location, it will route the policy. So who will do this? Automatically, this route 53 is route 53 will decide. Route 53 will decide where to transfer the queries or traffic. Okay. So this is our route 53. Got it? So we understood all the policies, right? Now let's go ahead and do the lab exercise. Okay. So our first thing, Janile, route 53. Basically, we are using this to create a domain and manage it. And it also acts as a routing mechanism to route the traffic to the respective server, unlike the load balancer. So load balancer आमे देखिचे, right? मने पका load balancer रे load balancer आमे देखते ले कौन जहाँ भी किसी user request आशी जदी based on the loads, it redirects the traffic to the available servers, right? Less loaded server. Based on the policy we do set up. Similarly, in the route 53, the network traffics, right? The user requests, the network traffics will be redirected based on the policies available in the route 53. Okay, now let's move on and do the exercise. So route 53, we can search here, the route 53, you can directly search route. You can see scalable DNS and domain name registrations we can do using route 53. So let's go to route 53 over here. As I said, you have to pay for the service to use. Okay. So if you are going to purchase a domain, then you have to pay for that. Okay. So let me go and click here, get started. So first thing is, see, these are the options it provides. So to register a domain, suppose you want to register like ranjitswine.com, I have a domain already, I have purchased the domain, right? So if you want to register domain on your name or any specific domain, if you want to, you can go ahead and register a domain. So simple जाइकरेटी हमें register domain जदी click करिवा क्रिएट तो तमरा ऑलरेडी domain अछि तमे चाहौ ट्रांसफर करिया पई माने अलगा को रजिस्टर्ड थ्रू अलगा को सर्विस प्रोवाइडर तमे यूज करिछ डोमेन तमे किनिछ से डोमेन को ट्रांसफर करछ जे थ्रू राउट 53 तमे मैनेज करिवा पई देन यू कैन यूज दिस ट्रांसफर डोमेन क्रिएट गोटे होस्टेड जोन क्रिएट करियो जोटी तमे एप्लीकेशन सर्वर होस्ट करिवा पई तमे होस्टेड जोन क्रिएट करिवो हेल्थ चेक जोटा हमें पढिले पॉलिसी रे हेल्थ चेक कॉन्फ़िगर करिया पई यू कैन डू दैट अनदर वन इज कॉन्फ़िगर द ट्रैफिक फ्लो right? How you want to route your traffic, right? How you want to make your traffic to flow to the respective endpoints.
how resolver configure resolvers. This सब details है अच्छे हमें धीरे धीरे जानिबा. But first let me show you the register, how to register domain. Okay, let's get started. So registered domain, as I said, it is unique, right? Any domain actually you want to purchase, if it is already available, then it will not allow you to create the same name, right? Suppose already ranjitswine.com is already there, right? If I just search for, so you search for a domain. If you are into search for a domain, suppose ranjitswine.com, right? Search. See what it says? ranjitswine.com is not available. But ता हिसाब रे से हमको कौन दे दोची different domain name दो जेमती कि ranjitswine.net, ranjitswine.org, .io, .co, ranjit-swine.com, info, right? ये सब details से दे दोची. ता सहित तमरा प्राइस भी पर ईयर प्राइस $17 USD, right? तुम्हें चाहिए जदि ताकू किनि पाए. Suppose the standard pricing देखिबा. Standard pricing रे तमरो जो टॉप लेवल डोमेन रहउची TLD टॉप लेवल डोमेन तार प्राइस केते देखो .ac तमे जदि नबो सपोज ranjitswine.ac तो मते 99 USD दबाउ पड़िबो US डॉलर, राइट? तो 99 US डॉलर. .after, .accountants, .academy 13 USD, .academy, ranjitswine.academy $13, right? ये सब डिटेल्स रे अच्छी $40 all kind of things. So बहुत सारा अच्छी तमे जदि किछि भी सर्च करा पे चाहू छ सपोज मु .in चाहू छी, so .in बहुत सस्ता अछि जोटे 8 USD, so around 700 rupees it will cost you. 690 or 700 rupees it will cost you, right? 8 rupees. सेमती .com रो केते अछि जदि हम देखियो .com रो प्राइस केते .com अछि 15 USD. 15 into एबे INR केते अछि कन्वर्ट कर जति प्राइस आसीबो सेति प्राइस तुम पे करे पड़ियो, राइट? 15 USD हमें डॉलर धरि की चलो तो इंडिया करेंसी रो किछि वैल्यू ही नाही, दिनक दिन दुर्बल होबार लागि छै, तार किछि माने सॉल्यूशन ही आसी परनु, राइट? तो हमें डॉलर ही धरि चलियो वर्तमान. तो डॉलर आसी 15 USD जोटा कि .com रे आसी. तो सेही परि सपोज मोडे सर्च करबी जेमती कि खाली कोतल जेमती सपोज दिवेंदु चाहछन ताकर नार गोटे करिया पे तो मुझे सर्च करबी दिवेंदु, राइट? .com चेक करछि अछि ना नाही तो wow, divendu.com is not available. Somebody has already taken. Okay, so if I search for divendukumar.com, Divendu Kumar. Okay, so exact match search result is found and 15 USD dollar. So you have to select it, and once you select, see this and proceed to checkout. So I'm not going to check out it. That means you are going to buy it, right? So proceed to checkout. So you will just you have to provide some informations like your address, your mobile number, email address, and all these things, and then your credit card number or debit card number तमे शेयर करिवो ता सहित तापर पेमेंट कला पर डोमेन टा तम नारे रजिस्टर हे जिवो आउ रजिस्ट्रेशन बहुत कम समय भीतर हे जिवो जेमति कि हार्डली फ्यू मिनिट्स लागिवो एक्टिव होबा पई. तो एक्टिव हे जिवो, एक्टिव हे गला पर तापर तमे चाहिबो जाके माने डोमेन होस्ट करिवा पई एप्लीकेशन बने पई हम बने पारिबो. Okay, already जरा suppose गोटे domain अच्छी तमे ट्रांसफर करिया पई चाहू छ, then you can go ahead to transfer domain. Click here. एटी गोटे domain ना देलो suppose मु चाहूनी ट्रांसफर करिया पई जदि चाहू छ मु एटा ट्रांसफर करिया पई then चेक करिवो किछ अवेलेबिलिटी जदि ट्रांसफर पई करिया चाहू छ then ता डिटेल्स तुमको बते दो केमती ट्रांसफर करियो. जेमती कहली ranjitswine.com ऑलरेडी मु कोन फर्स्ट परचेस करतली कोतरु Amazon रु 53 यूज करिकरी इन 2015-16 अराउंड. ओके, मु Amazon रु ही परचेस करतली त वर्तमान मु ता ट्रांसफर कर दै छी अलगा सर्विस प्रोवाइडर, राइट? तो सेमती तमे भी
तमे यूज करि परियो तमर जदि अलगा सर्विस प्रोवाइडर पाखर किछि डोमेन अछि तमे चाहूचो Amazon को आनिबा पई then you can go ahead and use this functionality, right? Transfer domains to Route 53, then you can use it. Samti create hosted zone. So a hosted zone create kariba pai तमको कोन गोटे domain create करिथिबा दरकार. You should have a domain created first. Okay, then you can use that domain to create a hosted zone. जेतु मोर एटी domain किछि नाही तो मु कोन करनी एटा केटे क्रिएट करि परिबिनी. जदि मु स्टार्ट करूची then से मते कोन domain ना पचार देखो domain ना पचारुची तो मते Route 53 भीतर ही domain थिबा दरकार. जेतु मो पाखरे किछि domain ही नाही तो I cannot create a hosted zone. तबर hosted zone रे different options दोछि जेमति के ला गोटे public hosted zone आ गोटे ला private hosted zone. So a public hosted zone determines how traffic is routed to the internet on the internet, right? The public जदि तमे चाहूचो गोटे application public facing रखिबा पई, right? So you can host it in public hosted zone or private रे zone determine how traffic routed within an Amazon VPC. So जोटे private hosted zone तमे यूज करि परिबो. Okay, so you can go ahead and use that. So if you're a tech savvy, like if you are like very fond of writing code and developing applications, websites, so more of us actually कहीं की एटा माने बहुत इजीली आपको सिखिली मोर जेमि कोची 2000 अराउंड 2011 अराउंड मते कोन ता आगुरु माने 2007 और 6 अराउंड कोन डेवलपमेंट रथिली, राइट? त मु डेवलप करथली तो जोटा कि मो पई इजी थिला कि ना मु कोन C++ कोड लेखि डेवलप करथली मते फ्रंट एंड माने एप्लीकेशन डेवलप करथली .NET रे तो जावा रे छोटो मोटो प्रोग्राम लेखि दउथली तो जोटा कि मोर माने जो टाइम टा मो पाखरे बोलतलम से टाइम टा यूज करथली किछि कोडिंग करिवा पई, राइट? तो सेठी मु छोट छोट एप्लीकेशंस बनौथली तो बनेला परे कोन मोर लोकल लैपटॉप रे रहउतला तो ताको मु कोन ग्लोबली एक्सेस करि पार नथली तो सेठी मो माइंड खेलला मु ताको केमदी ग्लोबली एक्सेस करी तो सेति पय मते कोन गोटे होस्टेड जोन दरकार ता पय मते गोटे डोमेन दरकार से एप्लीकेशन जोरा मु बनौतली कोन मु लोकल लैपटॉप रे ही मु ताको होस्ट करतली एक्सेस करतली बट अनदर लैपटॉप जदी मु चाहउतली एक्सेस करिया बई थ्रू इंटरनेट पार नथली तो ता पय मते सेमती गूगल रे जस्ट एक्सप्लोर करी करी सेतल एते किछि ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सब किछि त नथिला ना तो केवल याहू सर्च इंजिन थिला आ गूगल सर्च इंजिन याहू आ गूगल आरी भितरे हम सर्च करथलु बेसिकली तारी भितरे हमको खोजिकरी पाइबार तला कोटा सेतबेले को फर्स्ट जेतबेले डोमेन गोटे किनथली मोर मन अछि एबे तना कोन एस्टेक लैब .in जदे swinetechlab.in बनेथली estekLab.in तो जोटा कि मु गूगल रे सेटा मु कोन करथिला गूगल रो डोमेन टा किनथली गूगल रो ओके गूगल से तो अभी गूगल प्रोवाइड करछि गूगल डोमेन रजिस्टर यूज करी करथल डोमेन किनथली आ सेटिंग मु होस्ट करथली तापर नेक्स्ट बिग रॉक यूज करली bigrock.in जोटा कि इंडियन माने रजिस्टर्ड गोटे जो तुमको डोमेन रजिस्टर पे हेल्प करिवो आ सेटा यूज करके मु तांकर होस्टेड जोन यूज करथि तापरे Amazon यूज करली तापरे GoDaddy होस्टिंग इंटर सर्वर बहुत सारा यूज करी सच मो लाइफ रे अराउंड 30-40 डोमेन्स मो पाकर अछि वर्तमान यूज करछि बट सब मंथली ईयरली नॉट मंथली ईयरली पेमेंट करूछि सब जगह ओके पे करिया पड़छि यू हैव टू पे फॉर दैट तो जोटा भी धरो एबे आमे $13-15 रे सपोज गोटे डोमेन आमे किनी देले बट एबे ए टाइम रे पुनी नेक्स्ट टाइम से मन बढ़ई करी ताको प्राइस तार बढ़ई की तुमको देबे राइट जोटा $15 तमे $20 अराउंड या $25 तमे पे करिया पड़िबो रिन्यू करिया पड़िबो एवरी ईयर यू हैव टू रिन्यू इट सो तांगर जो पैकेज तो ईयरली पैकेज 2 ईयरली और 6 इयर्स तो पैकेज थियो से हिसाब तुमको कंसेशन रेट रे करि पाइबो ओके सो से होस्टेड जोन तुम जे जमती कहउतली मु केमती एते एक्वेंटेड आस्तले तो से हिसाब तुम जदी प्रैक्टिस करछो तुम जदी किछि कोडिंग नॉलेज अछि बा किछि एप्लीकेशन अछि तुम होस्ट करे चाहछ हम ऑलरेडी एप्लीकेशंस हमें देखि जे कोन HTML एप्लीकेशन बनै करी अपाची सर्वर यूज करी करी ऑलरेडी EC2 इंस्टेंस रे हमें होस्ट करी सारी बहुत थर राइट टमकाट सर्वर यूज करी करी हमें जावा एप्लीकेशन को होस्ट करी सारी
तो सिमिलरली तमे किसी गोटे आइडियाज हो राइट सी थरे मु जेमती कहूची ना तमे यदि वंस यू आर इन्वॉल्वड into this no every time you'll no love to do this the first thing होची हमें कौन सी दिन करने को हमको सेटा माने कौन माने मजा लागुथिबा दरकार you have to enjoy the work whatever you are doing then only you'll do all this kind of setups and all तो जब मते फ्री टाइम जिते भी मिलुतला मुझे बस पढ़ुली लैपटॉप आगे बस चलाउली काम करथली बेसिकली ओके तो सही हिसाब से तुमको करियो पड़ियो तो होस्टेड जोन्स तमे देखो मु भी तुमको देखो मनी एक्चुअली मैटर करिवनी जेतबे तुम किछि सिखिबा को चाहूछ राइट तुम कैरियर पई तुम यदि किछि चाहूछ मनी शुड नॉट बी ए बैरियर तमे एमती अननेसेसरी बहुत पैसा खर्च कर दोछ राइट तो डोमेन किनियो के $15 है कि $15 के हार्डली केते 1000-1200 भीतर पड़िबो 1300 ଭିତରେ राइट सॉरी 1300 अराउंड 1300 अराउंड आसीबो बस सरला 1300 पुनी वर्ष को पई 1 ईयर तम 1 ईयर भीतर तुम जहाँ भी किसी तमरो एप्लिकेशन यूज करबो सेमती मु जेमती मोरो देखो बहुत सारा जेमती हमरो एटा पर्टिकुलर रंजित स्वाइडर जेटा परे हमरो ए एप्लिकेशन ता जो हमरो अछि क्लासरूम रो राइट क्लासरूम एप्लिकेशन ता ए एप्लिकेशन ता भी हमरो सही पर्टिकुलर ranjitswai.com ड्रीम होस्ट है तो ये भी गोटे होस्टेड जोन मु क्रिएट करछि यार जोटा कि मोर एप्लिकेशन रन होछि वेबसाइट रन होछि राइट तो तमे यूज कर परिबो सॉल्यूशन तो आउ कोन रहिला बाकी तो कंप्लीट डिटेल्स हम जानी देले राइट केमती राउट 53 जोछि आउ केमती यूज करि परिबा आ गोटे देखो राउट 53 गोटे होस्टेड जोन विषय में जानिले तो ओके अब जो ए रेकॉर्ड्स विषय में कथा होतले राइट जो रेकॉर्ड्स नेम सर्वर विषय तमे जतो होस्टेड जोन गोटे क्रिएट करिवो ता परे जाई तमे कोन से ए रेकॉर्ड वगैरह सेटअप करिवो ओके वर्तमान किछि जेतो हम पाकर नाही हम क्रिएट करि परिबु यदि तुम domain create करिया पई चाहूछो then you can create a domain and I'll guide you how to do the setups okay छोटो applications तमे host करि परिबो okay guys तो जानि पले route 53 रा काम कोन बेसिकली कोन हमें route 53 रे करि परिबा right okay guys basically it is used to register a domain and host it right host a domain ना हमें गोटे domain नहीं की तो गोटे application host करि परिबा गोटे server run करि परिबा ता विषय में जानि ले राइट तो तमे जदी मोर आउ गोटे तुम लिंक वीडियो बा शेयर कर देबी जो तरे की बिना होस्टेड राइट जोन क्रिएट रे भी तमे वेबसाइट होस्ट करि परिबो जोटे कि हमर S3 बकेट यूज करित्री जोटे कि हमर स्टैटिक वेबसाइट तो फर्स्ट मु सेटा ही करित्री स्टैटिक वेबसाइट ही यूज करथली जोटे कि बिना होस्टेड जोन देखो राउट डोमेन रजिस्टर करबा को हम लागियो 1300 बट होस्टेड जोन हमको नबा पे लागियो केते जानछो अराउंड 1800 1900 ऑलमोस्ट अराउंड 2000 वाले आसी जीवो होस्टेड जोन नबा पे वर्ष को येसला केते 1300 यस जीवो हमको 1800 बा 2000 वाले आसी जीवो तो सब जगह 3000 3300 200 वाला टोटल आसी जीवो तो होस्टेड जोन जतो हमें नौची ना सेटीरे कोन होची ना आप से हमको गोटे सर्वर क्रिएट करके दोउची और से सर्वर होची मैनेज्ड बाय AWS दैट सर्वर विल बी मैनेज्ड बाय द AWS ओके सो तुमको से हो सर्वर रे तमे कोन तमरा एप्लीकेशन को होस्ट करिवो राइट तमरा जो कोड लिखि दियो HTML कोड बा PHP कोड बा किछ भी तमे जावा कोड बा .NET कोड चा भी तमे होस्ट करे पे चाहूछो देन यू कैन यूज दैट होस्टेड जोन इट्स बेसिकली अ सर्वर होस्टेड जोन पे तुमको दबो तो को टाइप रो होस्टेड जोन लिनक्स मशीन हो चाहूछो कि विंडोज मशीन हो अपन चाहूछो राइट तार सिलेक्शन भी तुमको से दबो हम सिलेक्ट करले सही हिसाब रे तमरा एप्लीकेशन तमे रन कर परिबो ओके that's all guys any doubt we can discuss